Good morning, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the question answers and book back exercise for the lesson Sadar Naman, lesson number 1, class 7 from the book Gunjan Hindi Patmala. If you still not subscribed my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section and surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. Abhyas Shutlik Andiyare ललकारा, पाँव, रूप, निर्जन, मंचदारों, सत्कारा, मंत्र, मातृभूमि. कविता बोथ मौखिक ओरल क्वेश्चन आंसर टू एनहांस योर स्पीकिंग स्किल. अंधियारा किसका प्रतीक है? अंधियारा मीन्स डार्कनेस. ஸோ டார்க்னஸ் சிம்பிளைசஸ் வாட்? ஸோ अंधियाराன்றது இங்கே போயட் எதுக்கு சொல்லியிருக்காரு? अंधियारा अशिक्षा अनएजुकेशन, अज्ञानता विदाउट नॉलेज, समाज में व्याप्त बुराइयों का प्रतीक है. ऑल द बैड थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. सो दिस अंधियारा सिंबलाइजेस द डार्कनेस सिंबलाइजेस फॉर படிப்பில்லாதது, நாலேஜ் இல்லாதது, சொசைட்டியில் இருக்க ஆல் பேட் திங்ஸ். ஸோ अंधियारा अशिक्षा अज्ञानता समाज में व्याप्त न दैट एग्जिस्ट बुराइयों का प्रतीक है. पथ का रूप किसने संवारा है? हु हैज़ added beauty to the path? Who has created the path for the people? अनजान राह पर भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करने वालों ने पथ का रूप संवारा है. So the person who has helped the people who have lost the way in the strange path, that person only has decorated and added the beauty for the path. ஸோ தெரியாத ஒரு வழி தவறி போனவங்களுக்கு யார் கரெக்டான டைரக்ஷன் காட்டுறாங்களோ அந்த ஆள் தான் அந்த வழியை நல்வழிப்படுத்தினது ஆர் டெக்கரேட் பண்ணது. मानवता का माली कौन है? हु इज़ द गार्डनर फॉर द ह्यूमैनिटी? मानवताना ह्यूमैनिटी, माली इज़ द गार्डनर. ஸோ வாட் டஸ் த கார்டனர் டூ? ஹீ டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் த ஃப்ளவர்ஸ், ரைட்? ஃப்ளவர்ஸ் நல்லா ப்ளூம் ஆகிறதுக்கு நல்லா தண்ணி, அதோட வீட்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுவார். ஸோ இங்கே நம்ம லைஃப்பில் ஹியூமனிட்டியை டேக் கேர் பண்ணுற பர்சன் யார், கார்டனர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ समाज में व्यापक, ஸோ सोसाइटी இருக்க कुर्तियाँ, बैड थिंग्स, बुराइयाँ, जैसे शूलों को विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला, द पर्सन हु स्टैंड्स अगेंस्ट द बैड थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी. ஸோ நம்ம சொசைட்டியில் இருக்க தப்பான விஷயத்துக்கு குரல் கொடுப்பாங்களே, எதிர்குரல் கொடுப்பாங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் ஹூ டாக்ஸ் अगेंस्ट द नेगेटिव थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी. और दूसरों के जीवन में आई बाधाएं दूर कर. ஸோ இன்னொருத்தவங்க லைஃப்பில் வந்திருக்க கஷ்டங்கள், அப்ஸ்ட்ரக்கல்ஸை दूर பண்ணுறவங்க. दूर करना हु टेक्स रिमूव्स द obstacles that comes in the life of others. उनके जीवन को खुशी बनाने वाले, அவங்களோட லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஆக்குறது, who turns a life to be more happy, को मानवता का माली कहा गया. ஸோ அந்த மாதிரி பர்சனை தான் the poet has told has a मानवता का माली, who is the gardener of the humanity. The person who is against the bad things that exist in the society, the person who removes the obstacles in others' life and bring happiness in their life, such person is told to be the मानवता का माली. ओके. कविता में मझदारों के मांझी को नमन क्यों किया गया है? सो इन द पोएम वाई द पोएट हैज ग्रीटेड विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड विथ पोलाइटनेस टू द boatman who takes care of the boat which is stuck in the middle of the sea or river. Majdaron is something that is in the middle of the ocean or river. Manji is the boatman who takes care of the boat. Okay. So why the poet has with due respect has given the salute to such person. संकट में फंसे लोगों की सहायता करने वाला व्यक्ति महान होता है. So the person who helps the person who is in the difficulty. So the ஒரு எந்த ஆள் வந்து இன்னொருத்தவங்களை கஷ்டப்படும் போது அந்த ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வராரோ, he is a great person. So इसलिए कविता में मझदारों के मांझी को नमन किया है. So मझदारों के मांझी means the boatman who takes care of the boat in the middle of the ocean or river, அவருக்கு நமன் பண்ணியிருக்காங்க. So he faces the challenge with his cleverness. What he does, he tries to pull the boat out of the mid of the stream of water, right, in the river or ocean, and makes the boat to be safe in the corner. So
அந்த நடு ஆற்றுலேருந்தோ இல்லை ஓஷன்லேருந்து புல் பண்ணி கிளவர்னஸ்னால கூட்டிகிட்டு வந்துடுவார் வெளியே. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து வெளியே கூட்டிகிட்டு அந்த மாதிரி யார் வந்து மற்றவங்களோட லைஃப்பில் இருக்க கஷ்டத்தை புரிஞ்சு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் கிரேட் பீப்புள். அந்த மாதிரி கிரேட் பீப்புள் இஸ் கம்பேர்ட் டு த போட்மேன் ஹூ இஸ் டூயிங் த கிளவர் ஆக்ட் டு பிரிங் த போட் பேக் டு த ஷோர், ரைட்? ஸோ அவங்களுக்கு தான் இந்த போயமில் சல்யூட் பண்ணியிருக்கார் போயட். नेक्स्ट इज द लिखित प्रश्नोत्तर फॉर योर राइटिंग स्किल. कवि ने किन किन को नमन किया? सो whom all the poet has greeted, did the salute with due respect. कवि ने बुराई रूपी अंधकार को दूर करने के लिए लाए दीप का दीप जलाने वाले, the person who has lit the lamp to get rid of the bad things, the darkness that exists in the society. भटके लोगों को सही मार्ग दिखाने वाले मार्गदर्शन, the person who shows the right path to the people who have lost their path. संकट में फंसे लोगों के मददगार, the people who are stuck in the difficulties or challenges and the person who is helping such people. मानवता के रक्षक, who is taking care and protecting the humanity. मातृभूमि की रक्षा में शहीद हो जाने वाले व्यक्तियों, so to safeguard the motherland who has sacrificed their life. जाने वाले व्यक्तियों का सादर नमन किया है. So all these people the poet has did the salute with due respect. சொசைட்டியில் இருக்க இருட்டை போக்குறதுக்காக லிட் பண்ணாங்க, வழி லாஸ்ட் ஆகி தொலைஞ்சி போய் இங்கே அங்கே அலையிறவங்களுக்கு கரெக்டான வழி காமிச்சவங்க, ஏதாச்சும் டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி வெளியே கூட்டிகிட்டு வந்தவங்க, ஹியூமனிட்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணவங்க அண்ட் மதர்லேண்டுக்காக லைஃப் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண பீப்புளுக்கு இந்த போயமில் போயட் வந்து சல்யூட் கொடுத்துருக்காரு विद ड्यू रिस्पेक्ट. कविता की वे पंक्तियाँ लिखिए जिसमें शहीद के बारे में बताया है, साथ ही उन पंक्तियों की व्याख्या भी कीजिए. सो यू हैव टू राइट द लाइन वेयर द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट द शहीद पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड द लाइफ फॉर द मदरलैंड एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दैट लाइन ऑल्सो. सो द लाइन दैट हैज कम इज, जिसने पहला तिलक लगाकर जय का मंत्र उच्चारा है, मातृभूमि के उस शहीद को सादर नमन हमारा है. दिस इज द पोएम लाइन्स, राइट, विच टॉक्स अबाउट द पर्सन हु हैज सैक्रिफाइस्ड द लाइफ फॉर द मदरलैंड. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन दिस लाइन. कवि उस शहीद को आदरपूर्वक नमन कर रहा है. सो द पोएट इज विथ लॉट ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट इज सल्यूटिंग द पर्सन हु हैज डाइड टू सेफगार्ड द मदरलैंड, जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए दुश्मनों की चुनौतियों को स्वीकार किया, हु हैज एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ द एनिमीज टू सेफगार्ड द मदरलैंड, जिसने माथे पर मातृभूमि की मिट्टी का तिलक लगाकर जय घोष किया है, एंड हु हैज केप्ट द तिलक ऑफ द मड ऑफ आवर मदरलैंड एंड हैज बीन चैंटिंग द विक्ट्री, और शहीद हो गया एंड हु हैज sacrificed the life in the war. पोएट வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக யாருக்கு பண்ண, ஹூ ஹேஸ் சாக்ரிஃபைஸ் த லைஃப் டு சேஃப்கார்ட் த மதர்லேண்டை சேஃப்கார்ட் பண்ணதுக்கு யார் உயிர் விட்டாங்களோ, யார் துஷ்மனோட எனிமியோட சேலஞ்சஸ் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு மாத்ருபூமியோட விக்ட்ரிக்காக சாண்ட் பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி பர்சனுக்கு தான் அவங்க சல்யூட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உயிர் விட்டவங்களுக்கு போயட் வந்து சல்யூட் கொடுத்துருக்காரு. उजियारे के सपूत ने अंधियारा कैसा दूर किया. सो द गुड सन हाउ ही हैज़ lit the lamp and remove the darkness. ஸோ अंधियाराவை எப்படி தூரம் பண்ணார், अंधियाराना the darkness-ஐ எப்படி வந்து the good sun has done with the lamp. उजियारे के सपूत ने समाज में व्याप्त अज्ञानता अशिक्षा को दूर करने के लिए ज्ञान का दीप जलाया और इस प्रकार अंधियारा दूर किया. So the good son of a country, what he did, he has lit the lamp to remove the ignorance, illiterate from the society, and he has fought against this by lighting the lamp, by spreading the knowledge across over to the people, right? So उजियारे के सपूत ने समाज में व्याप्त अज्ञानता और अशिक्षा को दूर करने के लिए ज्ञान का दीप जलाया और इस प्रकार एंड बाय दिस अंधियारा को दूर किया. So இலிட்ரஸியோ இல்லை நாலேஜ் இல்லாமல் இருக்க பீப்புளுக்கு நாலேஜை ஷேர் பண்ணி அந்த லேம்பை லிட் பண்ண தான் நாலேஜை ஷேர் பண்ணி அந்த டார்க்னஸை ரிமூவ் பண்ணார். पहला शूल हटाकर फूलों को सत्कारा है. आशय स्पष्ट कीजिए. यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. पहला शूलना द फर्स्ट थॉर्न रिमूव பண்ணிட்டு was given the respect to the flower. समाज में व्यापक कुरीतियाँ बुराइयाँ शूल है. ஸோ சொசைட்டியில் இருக்க தப்பான ஒரு விஷயங்கள் வந்து இட்ஸ் லைக் ए थॉर्न जो समाज को कष्ट देती है. सो विच गिव्स डिफ़िकल्टीज़ टू द सोसाइटी. सोसाइटिயில் இருக்க பீப்புளுக்கு கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும். उसके विकास में बाधक है एंड इट स्टॉप्स द डेवलपमेंट. अब्स्ट्रकलाக தான் நிற்கும். ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்கலாக தான் இருக்கும் த பேட் திங்ஸ் தட் எக்ஸிஸ்ட் இன் த சொசைட்டி.
उन्हें दूर करके जिसने फूल अर्थात अच्छाइयों अच्छी नीतियों को लाने का प्रयास किया है ये आदर के योग्य हैं. And the person who has removed the bad things and has given the importance to the good things. நல்ல மாரலை கொடுக்கணும், நல்ல விஷயத்தை சொசைட்டியில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்னு யார் ட்ரை பண்ணாங்களோ that person is capable of to get the due respect, right? So the existing bad things எல்லாம் ஒரு thorn மாதிரி தான், சொசைட்டிக்கு கஷ்டத்தை தான் கொடுக்கும் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அப்ஸ்டக்கல்ஸாக தான் நிற்கும். அந்த கெட்ட விஷயத்தை தூரம் பண்ணிவிட்டு நல்ல விஷயங்கள், நல்ல நீதி, நல்ல மாரல்ஸை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யார் ட்ரை பண்ணாங்களோ அந்த மாதிரி people are capable of getting the respect. सादर नमन कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? What is the inspiration you get from this poem सादर नमन? सादर नमन कविता हमें परोपकार करने की प्रेरणा देती है, टू हेल्प अदर्स. परोपकारना மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோன்ற ஒரு மோட்டிவேஷன், இன்ஸ்பிரேஷன் நம்மளுக்கு கொடுக்குது. दूसरों की भलाई करने के लिए कष्ट सहना, ஸோ இன்னொருத்தவங்களுக்கு நல்லது பண்ணுறதுக்காக டூ குட்னஸ் ஃபார் அதர்ஸ் யூ ஹாவ் டு பேர் த டிஃபிகல்ட்டிஸ், கஷ்டம் வந்து பேர் பண்ணிக்கணும். खतरे उठाना हमें श्रेष्ठ बनाता है और चैलेंजेस एक्सेप्ट பண்ணுறது நம்மள பெஸ்ட்டாக ஆக்கும். when you face the challenges, when you face the dangers, it makes you the best. ऐसे व्यक्तियों को सदा सम्मान होता है. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனுக்கு எப்பவுமே ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும். ஸோ the people will be respecting such people who does good things for others, for that who bears the difficulties. ये कविता हमें महान काम करने की प्रेरणा देती है. एंड दिस पोएम ऑल्सो इंस्पायर्स अस टू डू ग्रेट थिंग्स. हम संकट में फंसे लोगों की सहायता करें. वी हैव टू हेल्प द पीपल हु आर स्ट्रक इन द डिफिकल्टीज़. ஸோ கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு மோட்டிவேஷன், இன்ஸ்பிரேஷன் இந்த पोएम கொடுக்குது. शिक्षित बनकर समाज की बुराइयों को दूर करें. सो बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन वी हैव टू रिमूव द बैड थिंग्स फ्रॉम आवर सोसाइटी. पथभ्रष्ट लोगों की सही मार्ग दिखाएं. पथभ्रष्टना हु हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द ரைட் டைரக்ஷன், அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான டைரக்ஷன்ஸை காட்டணும், கைட் பண்ணணும். मातृभूमि की सेवा में अपने सर्वस्व न्यौछावर करें. ஸோ मातृभूमि மதர்லேண்டோட சர்வீஸ்க்கு ஹூ சாக்ரிஃபைஸ் எவ்ரி திங். சர்வஸ்வனா எல்லாமே न्यौछावरனா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஏ கவிதா हमें यही सिखाती है. ஸோ இந்த போயம் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தான் சொல்லித்தருது. ஸோ வி ஹாவ் டு ஹெல்ப் அதர்ஸ், we have to do goodness for others. அதுக்காக ஏதாச்சும் கஷ்டங்கள் வந்தால் இல்லை ஏதாச்சும் சேலஞ்சஸ், டேஞ்சர் வந்தால் அது நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்மளை கிரேட் பர்சனாக அது காட்டும். இந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு எப்போவுமே நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ எப்போவுமே நம்ம நல்ல விஷயங்களை செய்யணும் அப்படின்றது இந்த போயம் நம்மளுக்கு இன்ஸ்பயர் பண்ணுது. யாராச்சும் கஷ்டப்படுறாங்க இல்லை டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். நம்ம ஒரு நல்ல எஜுகேட்டடாக ஆகிட்டு சொசைட்டியில் இருக்க கெட்ட விஷயங்கள்லாம் தூரம் தள்ளணும். அதே மாதிரி பார்த்து மிஸ் பண்ணவங்க, தப்பி வேறு எங்கேயோ போனவங்களுக்கு கரெக்டான டைரக்ஷன்ஸில் கைட் பண்ணி அவங்கள சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சனாக கொண்டு வர்றதுக்கும் நம்ம மதர்லேண்டுக்கு சர்வீஸ் பண்ணி எல்லாமே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடெல்லாம் பில்ட் பண்ணணும் தான் இந்த போயம் நம்மளுக்கு சொல்லித்தருது, இன்ஸ்பயர் பண்ணுது. सो नेक्स्ट वन इज पठित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए. सो यू हैव टू रीड दिस स्टैंजा एंड यू हैव टू give the answers for this questions. जिसने पहला शूल हटाकर फूलों को सत्कारा है, मानवता के उस मालिक को सादर नमन हमारा है. The question. कवि ने किसे नमन किया? सो இந்த லைனில் கவி யாருக்கு வந்து सल्यूट கொடுக்குறாரு with due respect? कवि ने समाज की बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को बढ़ावा देने वाले लोगों को नमन किया. ஸோ இந்த சொசைட்டியில் இருக்க தப்பான விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு நல்ல விஷயங்களுக்கு ப்ரோக்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு யார் முன் வராங்களோ அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு தான் கவி வந்து இங்கே வந்து சல்யூட் கொடுக்குறாரு. ஸோ த poet has saluted whom in this stanza? So the poet has saluted the person who has removed the bad things from the society and developed the good things in the society. ஷூல் और फूल किसके प्रतीक हैं? ஸோ ஷூல் அந்த தான்ஸ் எதை சிம்பிளைஸ் பண்ணுது, அந்த ஃப்ளவர்ஸ் எதை சிம்பிளைஸ் பண்ணுது இந்த पोएमல. ஷூல் समाज में व्याप्त बुराइयों कृतियों के प्रतीक हैं. The thorns symbolizes the bad things that exist in the society or the bad customs which affects the society. So in the society like bad things thorns represent பண்ணுது. and fool வந்து अच्छाइयों के प्रतीक है. society இருக்க நல்ல விஷயங்களை flower symbolize பண்ணுது. flower symbolizes the good things that exist in the society. चमन का समान लय वाला शब्द. so rhyming word for chaman is naman. so the ending sound பார்த்தீங்கன்னா man. okay, rhyming word you have to pick which has the same sound at the end of the word. Next one, सही विकल्प चुनकर निशान लगाए. You have to choose a correct answer. अंधियारों को कैसे ललकारा गया? How the darkness has been challenged. ललकाराना challenge பண்ணிருக்காங்க. चेतावनी देकर by giving the alert message. सूरज के द्वारा by to the sun. दीप जलाकर by lighting the lamp. युद्ध की घोषणा करके by
giving the announcement of war. So we have challenged the darkness by lighting the lamp. दीप जलाकर is the right answer. पथिक कहाँ से गुजरा है? So पथिक is traveler. அவர் எங்கேருந்து travel பண்ணுறாங்க, pass on பண்ணுறாங்க? शहर से, from the city. निर्जन वन से, desolated empty forestல. हरे भरे वन से, which is fully greenery இருக்கிற ஒரு ஃபாரஸ்டில். गाँव से, from the village. ஸோ निर्जन वन से, ஸோ ஒரு எம்டியான ஒரு ஃபாரஸ்ட் where the path is not at all set, அதில் அந்த ட்ராவலர் வந்து போகிறாங்க. पहला शूल हटाकर क्या किया गया? सो फर्स्ट अनवांटेड थिंग्स रिमूव பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க? what has been done by removing the first thorn, that the bad things that exist in the society. दूसरों की बाधाएं दूर की हैं, ஸோ மற்றவங்களுக்கு வந்த கஷ்டங்களை தூரம் பண்ணிட்டாங்க. मार्ग पर फूल बिछाए हैं, ஸோ அந்த பாத்தில் they have put the flowers. फूलों के पौधे लगाए हैं, ஸோ फ्लावरिंग प्लांटर நம்ம பிளான்ட் பண்ணியிருக்கோம். खुशबू बिखेरी है, we have said the fragrance. So फूलों के पौधे लगाए हैं, we have kept the फूलों के पौधे means we have kept the goodness in and around by removing the bad things from the society. So check your answers here. नेक्स्ट वन इज मूल्य परक प्रश्न. कौन से कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए? सो எந்த மாதிரி வேலை செய்கிறவங்களுக்கு we have to respect. So how, what kind of work the people does that we have to respect them. So can you think and tell? எந்த மாதிரி people work பண்ணாங்கன்னா you will respect. अपने शब्दों में लिखिए, you have to write in your own words. अपनी चिंता ना करके दूसरों की भलाई में लगने रहने वाले. So not worrying about themselves, the people who spends time for others goodness. So who does something which is helping others, which is doing good for others, forgetting their own worriness. दूसरों की मदद करने वाले who help others. मानवता के रक्षक who takes care of the humanity and protects that humanity. मातृभूमि की रक्षा में शहीद हो जाने who sacrifice their life in safeguarding the country. तथा देश हित का कार्य करने वाले व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए. देश हित means who does good things for the country. So the people who are doing the work that helps the country, we have to respect them. And the mari people ku we have to respect. Right. The grammar part of the book back exercise will continue in the next video. If you still have any doubt or clarification in the question answers and the lesson based book back exercise, you can always put in the comment section. I surely reply back. Thank you, students.